पाकिस्तान के काबिल तलबा व तालिबात को इंटरनेशनल बिजनेस की महारतों से मुतल्लिक आगाही देने के लिए बहरिया यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल ऑफिस इस्लामाबाद के ज़ेर एहतमाम ग्लोबल समर स्कूल का इनेकाद किया गया। कोर्स का एहतमाम बहरिया यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल ऑफिस के डायरेक्टर अवैस महमूद की ज़ेर निगरानी किया गया था, जबकि मुर्तज़ा अली शाह असिस्टेंट डायरेक्टर ने इनकी मुआवनत की है। 6 रोज तक जारी रहने वाले कोर्स में तलबा व तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की है। कोर्स के शुरा को बैनुल-अक़वामी कारोबार के जदीद तकाज़ों से भी रोशनास कराया गया। शुरा को मगरबी और मशरकी दुनिया में कारोबार करने के हवाले से सैर हासिल इल्म फराहम किया गया। इंटरनेशनल समर स्कूल के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर सैंडर शोवर्स थे। डॉक्टर सैंडर एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस के प्रोफेसर हैं। वो कल्चरल इंटेलिजेंस के बैनुल-अक़वामी सतह के माहिर समझे जाते हैं। प्रोफेसर सैंडर ने कोर्स के शुरा को इंटरनेशनल बिजनेस स्किल्स पर लेक्चर्स दिए। I would like to acknowledge Mr. Kevan Hamid Raja for his kind assistance to help us here at Beria University at our yearly summer school. I've been working almost 11 years with Pakistan. I call myself a part-time Pakistani, and I'm so grateful that networks of also Balochistan, KPK, Afghanistan, you're here with us because it is in this light that we also would like to educate. We have a program where we would try to help young Pakistani from all over the country, from every subculture, to connect to the outside world, and that is my specialism. I've written great many books, but the last 4 years we try to make it from the Pakistani perspective. So what we do now is that we actually try to help the youth that wants to work abroad or wants to work in Pakistan. Like in Balochistan you have a great many amount of Chinese, and we have lessons where we look at the typical Pakistani ways and the expectations from the Chinese side. I also work as a dean of a university in China part-time, so I also work in China, and as a European we try to bridge this, and we try to help the Pakistani students to understand the global expectations, and they're quite different, and therefore such summer schools would help the nation to connect. And we call this program Musafariyat. It's also a book I'm researching at the moment, and I hope to write, where we would like to advise younger graduates or people interested in internationalization what it takes with Japan or France or Buenos Aires, Argentina, or Africa to connect. And the world is internationalizing at an unprecedented pace. It's not just Islamabad, it's not just Karachi, it is as much Afghanistan or the south, and these areas are in need of such information. We'd like to provide that in this event. If we look at what is the main element, then a lot of Pakistani these days are looking to go elsewhere, and it's hundreds of thousands of people. I think in July it was 1 million people asking for a visa. So you're competing with a lot of people. We see that the influence in Pakistan usually is also by the family or the parents or others, and they all like the youth to go to the Anglophone countries. So it's Australia, Canada, UK, America, Canada. That's wonderful, but the world is much bigger. However, what we need to take into account is that the world is different on the other end, and therefore you need to analyze yourself and also have an understanding of the other, and that way you're able to bridge that connect and be more successful. Because if it's so many people trying to go abroad, maybe it's also interesting to start to look for other areas and other opportunities, and for that we would like to help with the preparation, the cultural information, the information about self. I think Pakistan is wonderful. I like it. I like to come back here on a yearly basis, and I inshallah hope there one day will be a moment that not everybody needs to go out of the country, but the investors will come back again, and maybe in 2-3 years this will happen. But then these same skills apply, because you'll be working for a German factory, a Japanese tourism agency, and then still you need to apply these skills. So these skills are universal, they're part of you. Wherever you go, you take these typical traits that will help you to communicate. And technology is not going to help, because it's more communication, but not better communication. What we need is actually to have an understanding of the other, and that's something you can only do by preparation, and schools help in that. Yeah, so
a lot of people think that the Pakistani passport is among the less favorable ones. I would not agree. I think we are in shortage of labor. So what we need is people that have the correct skills and the correct tools and things to offer to our markets that are in demand. There's lots of areas where I see predominantly people from South Asia. There is lots of people, and actually people from India and Afghanistan and Pakistan living together in the same areas, and actually then you see how close the cultures are. So if you have the right things to offer, but if you run to that market and you are not prepared for the culture, but also you don't have the baggage to offer to the market, I think then it would be the worst passport. But if you have the right skill sets, it's actually easy. It's also, we see that in the golf with the kafala system and the sponsorship. If you have the right skills, you're not in that line. So you need to have the wheels and the speed and the motor to be on the highway. You cannot be on a little bicycle. And that, I think, is the thing. And then there is no bad passport. कोर्स के आखिरी दिन नेदरलैंड एम्बेसी सिंगापुर के डिप्टी हेड ऑफ मिशन हेजो प्रोवो मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने कोर्स के शुरा में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए हैं। The relationship between Pakistan and the Netherlands is very good, very close, and very broad. It ranges from the cultural and the social exchanges to the economy and business and political engagements, and it's very positive. And I've also experienced, ever since arriving here in Pakistan, that I've received a very warm welcome. Everyone's very open, welcoming, inviting me to their homes. So it's a wonderful relationship. Now, to do international business, I think it's gain experience here, and you should have enough energy to overcome certain obstacles, because of course traveling to Europe sometimes is a bit difficult, but you can start by actually engaging online and through email and through virtual communication, and then you can build your relationship, and you can gain the confidence from the other parties, and take it one step by step. And for all the students, there's one piece of advice I would give, and that is the way a Dutch professor once put it to me. In many countries, they teach you to give the right answers. In the Netherlands, they teach you to ask the right questions. So that is what I would like to give as advice to all the Pakistani students. I would like to also thank Mr. Kamran Hamid Raja for arranging this, and also Haroonuz for this transmission and the interview. Thank you very much. कोर्स के हवाले से तलबा और तालिबात ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। It was an incredible experience for me, and हमने इस कोर्स से बहुत सारी नई स्किल्स सीखी हैं, न्यू कल्चर्स इन्वेंट किए हैं, एक्सप्लोर किए हैं। बेसिकली यहाँ पे आने का जो मकसद है, इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल जो है वो समर 2024 कि आप इंटरनेशनल लेवल पे एज ए ग्लोबल सिटीज़न कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ये बिज़नेस स्कूल असल में बेसिकली था आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस के लिए, जो कि आपको बाहर जाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर आप स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी जॉब पाने के लिए। और उन्होंने जिस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, और बाहर के बिज़नेस को कराची में बैठकर जैसे लोग फ्रीलांसिंग भी करते हैं, और वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो फॉलो कैसे करने हैं, और वहाँ की कितनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और वहाँ पे किन चीज़ों की सर्टिफिकेशंस जो है वो ज़रूरत होती हैं, और आपके सीवी पे किस तरीके से बूस्ट अप लाना है, इन चीज़ों में काफ़ी हेल्प हुई है। इट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में काफ़ी जानने को मिला, उनका कंपैरिजन विद पाकिस्तान, रिक्रूटमेंट किस तरीके से होती है अराउंड द ग्लोब, पाकिस्तान से वो कितनी डिफरेंट है। और इसके अलावा काफ़ी और चीज़ें सीखने को मिली। वो ये था कि सिर्फ हम जो पाकिस्तानी कल्चर्स फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से फोकस करते हैं, जो हो गया कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, उसके अलावा भी और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे पाकिस्तान टैप इन कर सकता है। मगर जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अपने साथ लेके जाऊँगी वो ये है कि अगर आपने इंटरनेशनल बिजनेस बनाना है तो उसके लिए आपने पाकिस्तान छोड़ के बाहर नहीं निकलना है। I've seen your content, मैंने आपका प्लेटफॉर्म देखा है, you've been doing phenomenal job। आप एक सोशल मीडिया के थ्रू एंगेज कर रहे हैं पब्लिक को, आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं टू गो इन द राइट डायरेक्शन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से रिलेटेड जो हमने यहाँ पे एज आउटकम सीखा है ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम वो ये है कि हम सिर्फ अपने
ایک دائرے میں رہ کے چیزوں کو دیکھتے ہیں, ہم اپنے کلچر کے بارے میں سوچتے ہیں, وی ڈونٹ تھنک آف دا گلوب اراؤنڈ. اور بہت اینڈ لیس پاسبلٹیز ہیں ہمارے یہاں دنیا کے بارے میں. ہم اگر یہاں سے پاکستان سے صرف اپنے آپ کو باہر رکھ کے دیکھیں تو دیر از اے لاٹ آف ٹو ایکسپلور, اور ہم نے یہ چیزیں بہت سیکھی ہیں یہاں پہ.